In the heart of the rainy town of Westmere, nestled between a crumbling bakery and an old watch repair shop, stood a narrow brick house with ivy creeping up its sides. बारिशों वाले शहर वेस्टमेयर के दिल में एक पुरानी बेकरी और घड़ी मरम्मत करने वाली दुकान के दरमियान एक तंग ईंटों का घर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर बैलें चढ़ी हुई थीं. Most of the neighbors ignored the house. ज्यादातर पड़ोसी इस घर को नजरअंदाज करते थे. It looked abandoned, its windows dusty, its roof sagging. ये वीरान लगता था. इसकी खिड़कियां गर्द आलूद थीं और छत झुकी हुई थी. But every night a faint golden light flickered in the attic window. लेकिन हर रात एटी की खिड़की से मुधम सुनहरी रोशनी झलमलाती थी. 12-year-old Elsie Calder had just moved into the house with her father, a quiet man who spent most of his time fixing antique clocks. 12 साला Elsie Calder अभी अपने वालिद के साथ इस घर में मुंतकिल हुई थी, जो एक खामोश तबीयत के आदमी थे और अपना ज़्यादातर वक्त पुरानी घड़ियां ठीक करने में गुजारते थे. She missed her old home and her mother terribly, who had passed away the previous year. इसे अपना पुराना घर और अपनी माँ बहुत याद आती थी, जो पिछले साल वफात पा गई थी. Their new house felt cold, like it hadn't been touched by joy for decades. उनका नया घर सर्द महसूस होता था, जैसे इसे दहाइयों से खुशी ने छुआ ही ना हो. One evening, while unpacking boxes in the attic, Elsie noticed a strange wooden window. एक शाम, जब Elsie में संदूक खोल रही थी, तो इसने एक अजीब सी लकड़ी की खिड़की देखी. Unlike the others, it wasn't covered in dust. दूसरी खिड़कियों के बरक्स ये गर्द से ढकी हुई नहीं थी. It was spotless, almost glowing. ये बिल्कुल साफ थी, जैसे चमक रही हो. Curious, she peeked through. तजस्सुस के मारे उसने अंदर झांका. What she saw took her breath away. जो कुछ उसने देखा, वो देखकर उसकी सांस रुक गई. Instead of the usual gray rooftops and chimneys of Westmere, the window looked out onto a forest bathed in golden light. Westmere की आम सी सरमई छतों और चमनियों के बजाय इस खिड़की से एक जंगल नजर आ रहा था, जो सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था. Trees shimmered with silver leaves, and glowing blue birds fluttered between their branches. दरख्त चांदी जैसे पतों से जगमगा रहे थे और नीले रोशन परिंदे इनकी शाखों के दरमियान उड़ रहे थे. A stream of lavender water wound its way through the glade. एक लीवेंडर रंग की नदी जंगल से बल खाती हुई गुजर रही थी. Elsie blinked. It wasn't possible. Elsie ने पलकें झपकें. ये मुमकिन नहीं था. But when she opened the window, a warm breeze carrying the scent of jasmine drifted in. लेकिन जब उसने खिड़की खोली, तो एक गर्म खुशबूदार हवा अंदर आई, जो चंबीली की खुशबू से महक रही थी. Then she heard it, a voice, faint, melodic, calling her name. फिर उसने एक आवाज सुनी, मुद्दम, सरेली, जो इसका नाम पुकार रही थी. The next night, Elsie returned. अगली रात, Elsie वापस आई. She brought a notebook and started writing everything she saw. वो एक नोटबुक लाई और हर चीज लिखना शुरू कर दी जो इसने देखी. Each time, the forest beyond the window grew more detailed. हर बार खिड़की के पार का जंगल और ज्यादा तफसील से दिखाई देने लगा. She saw glowing deer, flowers that opened only when sung to, and even a girl her age, walking alone with a lantern made of stars. इसने चमकते हुए हरन, फूल जो सिर्फ गाने से खिलते, और अपनी उम्र की एक लड़की को देखा जो अकेली चल रही थी और सितारों से बनी लालटीन थामे हुई थी. But Elsie couldn't go through. The window was solid like glass. लेकिन Elsie इसके पार नहीं जा सकती थी. खिड़की शीशे की तरह सख्त थी. She tapped it, knocked. Nothing. उसने इसे थपथपाया, दस्तक दी. लेकिन कुछ नहीं हुआ. Until one rainy night, when thunder shook the house and the attic window flew open on its own. यहाँ तक कि एक तूफानी रात को, जब बिजली की गर्ज से घर हल गया और अटी की खिड़की खुद ब खुद खुल गई. The wind howled. The voice called louder than ever. हवा जोर जोर से चलने लगी. आवाज पहले से भी ज्यादा जोर से पुकारने लगी. Elsie, it's time. Elsie, वक्त आ गया है. She reached out, and to her astonishment, her hand passed through. इसने हाथ बढ़ाया
और हैरत की बात ये थी कि इसका हाथ खिड़की से गुजर गया. Inside the forest, everything was luminous and alive. जंगल के अंदर हर चीज रोशन और जिंदा थी. The girl with the lantern met her beneath a crystal tree. लालटेन वाली लड़की एक क्रिस्टल दरख्त के नीचे इससे मिली. I'm Wren, she said. This place is called Neitherwood. You've been chosen. मेरा नाम रेन है, उसने कहा. इस जगह का नाम नाइट रोड है. तुम मुंतखब की गई हो. Chosen for what? Elsie asked. किस लिए मुंतखब? Elsie ने पूछा. To be the next keeper of the window. खिड़की की अगली निगहबान बनने के लिए. Wren explained that the window was one of the last bridges between the magical and human worlds. Wren ने वजाहत की कि ये खिड़की जादुई और इंसानी दुनिया के दरमियान बाकी रह जाने वाले आखिरी पुलों में से एक थी. Long ago, people could pass freely between them. बहुत अरसा पहले लोग इनके दरमियान आज़ादाना आ जा सकते थे. But as humans forgot how to listen, how to believe, the windows closed. लेकिन जैसे जैसे इंसान सुनने और यकीन करने का हुनर भूल गए, खिड़कियां बंद हो गईं. Only a few remained. Each needed a keeper, someone who remembered wonder, someone who still believed in the invisible. अब सिर्फ चंद खिड़कियां बाकी रह गईं. हर एक को एक निगहबान की ज़रूरत है. ऐसा शख्स जो हैरत को याद रखे, जो नज़र न आने वाली चीज़ों पर यकीन रखे. But why me? Elsie asked. लेकिन मैं क्यों? Elsie ने पूछा. Because even in your sadness, you noticed, you wrote, you believed. क्योंकि तुमने अपनी अदासी में भी देखा, लिखा और यकीन रखा. Elsie trained with Wren for many weeks. Elsie ने कई हफ्तों तक रेन से तरबियत हासिल की. She learned to speak with trees, to gather light from the moon, and to listen to dreams. इसने दरख्तों से बात करना, चांदनी को जमा करना और ख्वाबों की आवाज़ सुनना सीखा. She even met a creature made entirely of shadow who had once been a poet. इसने एक ऐसी मखलूक से भी मुलाकात की जो मुकम्मल तौर पर साये से बनी थी और जो कभी एक शायर हुआ करती थी. But as she grew stronger, the forest began to change. लेकिन जैसे जैसे वो मजबूत होती गई, जंगल बदलने लगा. Shadows crept in. The river turned murky. A crack appeared in the sky above. साए आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगे. नदी गिरली हो गई. आसमान में एक दरार नमोदार हुई. Wren grew worried. Something's wrong. One of the old windows has been broken. If more collapse, our worlds will separate forever. Wren परेशान हो गई. कुछ गड़बड़ है. पुरानी खिड़कियों में से एक टूट चुकी है. अगर मजीद गिर गए तो हमारी दुनियाएं हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी. Back in her attic, Elsie found the cause. A man with gray eyes and a long coat, snooping around the attic with strange devices. अटी में वापस आकर एल्सी को वजह मालूम हुई. एक आदमी जिसकी आंखें सरमई थीं और लंबा गौकोट पहने हुए था, वो अटी में अजीब औजारों के साथ तफ्तीश कर रहा था. He was a closer, a person trained to shut down magical windows forever. वो एक closer था, ऐसा शख्स जिसे जादुई खिड़कियों को हमेशा के लिए बंद करने की तरबियत दी गई हो. I know what you are, he said to her, and I'm here to stop you. मैं जानता हूं तुम क्या हो, उसने इससे कहा, और मैं तुम्हें रोकने आया हूं. But why? Elsie cried. This place heals people. It's beautiful. लेकिन क्यों? Elsie चिल्लाई. ये जगह लोगों को शफा देती है. ये खूबसूरत है. It's dangerous, he said. It tempts people to leave reality behind. ये खतरनाक है, इसने कहा. ये लोगों को हकीकत को छोड़ देने की तरगीब देती है. He walked toward the window with a crystal spike, ready to strike. वो एक क्रिस्टल की नोक लिए खिड़की की तरफ बढ़ा, हमला करने के लिए तैयार. Elsie stood in front of it. I won't let you. Elsie इसके सामने खड़ी हो गई. मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी. In the battle that followed, Elsie used all the magic she had learned. इसके बाद होने वाली जंग में Elsie ने वो तमाम जादू इस्तेमाल किया जो इसने सीखा था. She summoned moonlight, whispered ancient forest songs, and even called on the shadow poet to confuse the man with riddles. इसने चांदनी को बुलाया, कदीम जंगली नगमे सरगोशी में गाए और यहाँ तक कि साया शायर को भी बुलाया ताकि वो पहेलियों से इस आदमी को उलझा दे. Finally, the spike shattered.
The man vanished in a gust of wind. आखिरकार क्रिस्टल की नोक टूट गई. वो आदमी तेज हुआ के झुमके में गायब हो गया. Wren appeared in the window again. You've done it. The window is safe. Rain खिड़की में दोबारा नमोदार हुई. तुमने कर दिखाया. खिड़की महफूज है. From that night on, the attic glowed with soft, golden light. इस रात के बाद से अति नरम सनहरी रोशनी से जगमगाने लगी. Elsie's father eventually noticed, and though he never asked, she saw a warmth return to his eyes. आखिरकार एल्सी के वालिद ने ये रोशनी महसूस की और अगरचे उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा, एल्सी ने उनकी आंखों में एक नई हरारत देखी. He started fixing clocks that didn't tick anymore. Just in case, he said. उन्होंने वो घड़ियां ठीक करना शुरू कर दें जो अब नहीं चलती थीं. बस एहतियातन, उन्होंने कहा. And every night, Elsie visited Netherwood. Now not just a visitor, but its protector. और हर रात एल्सी नाइथरवुड जाती अब सिर्फ एक मेहमान नहीं बल्कि इसकी मुहाफिज बन चुकी थी. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the heart of the rainy town of Westmere, nestled between a crumbling bakery and an old watch repair shop, stood a narrow brick house with ivy creeping up its sides. Most of the neighbors ignored the house. It looked abandoned, its windows dusty, its roof sagging. But every night, a faint golden light flickered in the attic window. 12-year-old Elsie Calder had just moved into the house with her father, a quiet man who spent most of his time fixing antique clocks. She missed her old home and her mother terribly, who had passed away the previous year. Their new house felt cold, like it hadn't been touched by joy for decades. One evening, while unpacking boxes in the attic, Elsie noticed a strange wooden window. Unlike the others, it wasn't covered in dust. It was spotless, almost glowing. Curious, she peeked through. What she saw took her breath away. Instead of the usual gray rooftops and chimneys of Westmere, the window looked out onto a forest bathed in golden light. Trees shimmered with silver leaves, and glowing blue birds fluttered between their branches. A stream of lavender water wound its way through the glade. Elsie blinked. It wasn't possible. But when she opened the window, a warm breeze carrying the scent of jasmine drifted in. Then she heard it, a voice, faint, melodic, calling her name. The next night, Elsie returned. She brought a notebook and started writing everything she saw. Each time, the forest beyond the window grew more detailed. She saw glowing deer, flowers that opened only when sung to, and even a girl her age walking alone with a lantern made of stars. But Elsie couldn't go through. The window was solid like glass. She tapped it, knocked, nothing. Until one rainy night when thunder shook the house and the attic window flew open on its own. The wind howled. The voice called louder than ever. Elsie, it's time. She reached out, and to her astonishment, her hand passed through. Inside the forest, everything was luminous and alive. The girl with the lantern met her beneath a crystal tree. I'm Wren, she said. This place is called Netherwood. You've been chosen. Chosen for what? Elsie asked. To be the next keeper of the window. Wren explained that the window was one of the last bridges between the magical and human worlds. Long ago, people could pass freely between them, but as humans forgot how to listen, how to believe, the windows closed. Only a few remained. Each needed a keeper. Someone who remembered wonder, someone who still believed in the invisible. But why me? Elsie asked. Because even in your sadness, you noticed. You wrote. You believed. Elsie trained with Wren for many weeks. She learned to speak with trees, to gather light from the moon, and to listen to dreams. She even met a creature made entirely of shadow who had once been a poet. But as she grew stronger, the forest began to change. Shadows crept in. The river turned murky. A crack appeared in the sky above. Wren grew worried. Something's wrong. One of the old windows has been broken. If more collapse, our worlds will separate forever. Back in her attic, Elsie found the cause, a man with gray eyes and a long coat snooping around the attic with strange devices. He was a closer, a person trained to shut down magical windows forever. I know what you are, he said to her, and I'm here to stop you. But why? Elsie cried. This place heals people. It's beautiful.
It's dangerous, he said. It tempts people to leave reality behind. He walked toward the window with a crystal spike, ready to strike. Elsie stood in front of it. I won't let you. In the battle that followed, Elsie used all the magic she had learned. She summoned moonlight, whispered ancient forest songs, and even called on the shadow poet to confuse the man with riddles. Finally, the spike shattered. The man vanished in a gust of wind. Wren appeared in the window again. You've done it. The window is safe. From that night on, the attic glowed with soft golden light. Elsie's father eventually noticed and, though he never asked, she saw a warmth return to his eyes. He started fixing clocks that didn't tick anymore. Just in case, he said. And every night, Elsie visited Neitherwood. Now not just a visitor, but its protector. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो के साथ आखिर तक रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।